हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल ओडिशा एक्सप्लोरिस्ट एंड आपण डिमांड अनुसार यही सीरीज नहीं आसी आपण स्पेशल सीरीज आमर ये रहिबो पूरा टोटल गोटे जदि देखिबा मासर करेंट अफेयर एंड ये क्लास रे आपण मानको पई पूरा टोटल जनवरी रो आमे करेंट अफेयर डिस्कशन करिबा एंड इथिरे आपण माने जानि रखंतु प्रत्येकटी क्वेश्चंस आपणकर जदि देखिबा बहुत ही हेल्पफुल रहइबो एंड इथिरे ओडिसा रो करेंट अफेयर ठु नै कि आमे कहि परिबा कि येस जो अदर आमर इकोनॉमी इंटरनेशनल न्यूज एंड पर्सन इन न्यूज स्पोर्ट्स जोड़ा जोड़ा एग्जाम रे आसी थाए ता ऊपर आमे फोकस करिबा एंड प्रत्येकटी क्वेश्चंस एंड आंसर को डिस्कशन करिबा एंड इथरे निहाती भाबरे आपन को गोटे बूस्ट मिल जिवो जेतेबेले आपन माने येस प्रिपरेशन करूसंदी टॉपिक गुडा काहेकि ना प्रत्येकटी टॉपिक इंपोर्टेंट प्रत्येकटी जिंस इंपोर्टेंट जेतेबेले आपन माने एग्जाम पई प्रिपरेशन करूसंदी एंड करेंट अफेयर तो जानिसंदी मोस्ट इंपोर्टेंट एंड जनवरी रो करेंट अफेयर जब केवल सिलेक्टेड करेंट अफेयर ही आपण मानक पई नहीं अणाई ताकि आपणकर कौन भी जगह प्रॉब्लम न हो या कौन सी जगह भी आपणकर ये प्रिपरेशन न रही जाऊ ताकू निहाती भाव आम देखा एंड फोकस करवा जिते भल से हो पार ये निजर प्रिपरेशन को आगू नवा एंड समस्ते शेयर कर दिंतु फ्रेंड सहित जो मैंने भी ये प्रिपरेशन होती कहीं ये क्लास आपण बहुत ही इंपोर्टेंट होगा जाऊँगी एथिरे आपणकर पूरा गोटे वर्षर जो करेंट माने रहीगला आमर मास वाइज आम ताकू गोटे समराइज करवा करेंट अफेयर को एंड एथिरे आपण मानकर प्रत्येकटी क्वेश्चंस रहिबा एंड आंसर भी करवा ता पूर्व जानी रखुँ डेली आपण अन एकेडमी क्लासेस होची जो मैंने बर्तमान सुधा आपण मैंने अन एकेडमी एप्लिकेशन डाउनलोड करना कर रखुँ अजय एंड डब्ल्यू साहब वेलकम प्लस रे आपणकर पूरा सिलेबस कंप्लीट करा जिबा एंड मैक्सिमम क्लासेस पीडीएफ आपण माने प्लस रे पाई परिबे स्पेशल क्लास भी आपणर फ्री ऑफ कॉस्ट रे कराउची बैच कोर्सेस एएसओ पई फाउंडेशन कोर्स आपणर देखंतु चारिटा अछि एएसओ पई ऑलरेडी चालीची नुआ बैच कोर्सेस आपण मानको पई आसीबो तेनु करी ट्राई करंतु ए सब बैच कोर्सेस रे भी जॉइन हेकि निजर प्रिपरेशन आगु नवा पई ओसीएस रो प्रीलिम रो बैच कोर्सेस रे भी जॉइन हे परिबे एंड समर टॉप फैकल्टी जो माने डेली बेसिस रे आपण पई क्लासेस करूसंदी एंड जतेबेले भी जॉइन हेबे कोड यूज करिवे निहाती भाबरे अमिया 10 मोनालिसा गुड आफ्टरनून एंड वेलकम आज 100टा क्वेश्चन डिस्कशन करिया समय समस्त बाहर अच्छी तो एंड समय बाहर करूँ एंड आपको आप देखूँ दी थर वीडियो टी देखिए जदि फास्ट थर भी आपंकर मन न रोचे एंड जो मैंने अन एकेडमी जॉइन होगा चाहते जॉइन हो पारे कोड यूज करूँ अमिया 10 मो कोड यूज कले मुझे स्पेशल गाइड करी एंड ता सहित डेली आपण जदि देखा ये प्रिपरेशन पीडीएफ मटेरियल एंड सब किसी पाइपर तो डायरेक्ट स्टार्ट करवा आमर क्लासेस उपरे जनवरी प्रत्येकटी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट एंड जनवरी करेंट अफेयर बहुत ही इंपोर्टेंट ऑडियो समस्त आसूँ ठीक ठाक जदि ऑडियो आसूँ देन यू विल स्टार्ट ओके तो ता पूर्व बाध्यतामूलक स्टेप जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर एंड लाइक करूँ बेल आइकन को भी क्लिक करूँ ताकि टाइम टू टाइम आपण को पाखे नोटिफिकेशन पहुँची जाऊ कि आम जितेबाला लाइव आसिले एनसीईआरटी रो क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो सारी एनसीईआरटी रो क्लासेस भी आपण मैंने देखिपारे तो फास्ट क्वेश्चन देखा एंड समस्ते टिके निहाती भाव रैपिड फायर टाइप रो जीवा चेष्टा करेंगे आंसर देवाक चेष्टा करेंगे द ट्रेडिशनल न्यू ईयर ऑफ तिबेटियन बुद्धिज्म कॉल्ड लिएस आम कह लोसार फेस्टिवल लोसार फेस्टिवल आम जदि देखा कौटी होता है सिंपल जिनस आप भल से मन रखु लद्दाख लद्दाख रे लोसार द तिबेटियन न्यू ईयर को आम पालन करा जाय थाए एंड इट इज द 15 days फेस्टिवल फ्रॉम द डेट ऑफ तिबेटियन लूनार कैलेंडर ये लद्दाख रे आसी थाए हो अन एकेडमी क्लासेस in which city PM Narendra Modi laid the foundation stone of Major Dhyanchand Sports University that is built an estimated cost of 700 crore मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जदि देखा इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ा भल से मन रखु ये हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश बहुत ही बढ़िया गाइफ्लेसन तो आम कहीपर पीएम मोदी द्वारा को इनवेल कराई 700 कोटीर ये प्रोजेक्ट एंड ये हूँ मेरठ उत्तर प्रदेश आउ थे मन रखिए मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी 700 कोटीर ये मेरठर उत्तर प्रदेश रे नेक्स्ट वन इन January 2021 हु लॉन्च द डैश डे कैंपेन कॉल्ड आम कहीपर पढ़े भारत टू एनकरेज रीडिंग हैबिट एमंग स्टूडेंट टू टिल ग्रेड 8 पढ़े भारत कोविड पर आपको इनिशिएट करा जाइथिला तो आपको आपण माने भल से जानी रखु आपको आम कहीपर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये 4th वन इज राइट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च करथिला आ 100 दिन रो आमे जदि देखिबा रीडिंग कैंपेनिंग कॉल्ड पढ़े भारत टू एनकरेज द रीडिंग कैंपेनिंग देखो पढ़े भारत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च करा जाइतिला जोथिरे आमे कहिबरे स्टडीइंग इन आमे कहिपरिबा निहाती भाबरे
बाल्मिक टू माने आम कहीपर पूरा इनिशियल रु आम कहीपर लास्ट टू ग्रेड 8 पर्यंत 100 डेज 14 वीक रो रीडिंग कैंपेन विल ऑर्गेनाइज इन जनवरी टू एप्रिल 2022। बहुत ही बढ़िया। गुड आफ्टरनून। Who recently appointed as the new chairman and chief executive officer railway board for tenure up to December 2022। एटी आपण माने छोट छोट जिनस गुड़ा बड़े भल से जानी रखिया दरकार एंड बुझिबा भी दरकार। रेलवे बोर्ड टेन्योर अप टू डिसेंबर सीईओ हो गले यस विनय कुमार त्रिपाठी अछंती। याकू अपॉइंटमेंट कराया जायछि आज अपॉइंटमेंट कमिटी कैबिनेट रेलवे बोर्ड रो आज जदी देखिबा सीईओ एंड एठी आपण भल से जानी रखंतु त्रिपाठी इज करेंट वर्किंग जनरल मैनेजर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर उत्तर प्रदेश एंड द अपॉइंटमेंट ये हूँ 6 months January 1 to 30 January एंड एससीसी अप्रूव्ड 6 month एक्सटेंशन दैट इज विनय कुमार त्रिपाठी अप टू डिसेंबर पर्यंत। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेट इट्स 64th राइजिंग डे और फाउंडेशन डे। देखो डीआरडीओ रो राइजिंग डे कथा जदि देखा आपण मैंने समस्ते भल से जानी रखिया दरकार दैट इज द 1 January 2022। वर्तमान टाइम रे चेयरमैन डॉक्टर जी सतीश रेड्डी एंड हेडक्वार्टर आम जब देखिए न्यू दिल्ली आमर कहीपर रोचे 64th राइजिंग डे एंड डीआरडीओ आपण मैंने समस्ते जानी ये हूँ 1 January 1958 रे को एस्टाब्लिशमेंट कराइला अमलगेटिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टिमेट TDEs ऑफ इंडियन आर्मी एंड द डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एंड जब देखिए डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन TDTP ओके नहीं डीआरडीओ एस्टाब्लिशमेंट करा जायतिला। डीआरडीओ निहाती भाव आपण मैंने जानी वेपन्स मिसाइल टैंक्स एंड आम जब देखा यस एयरक्राफ्ट हो गला एंटी टैंक मिसाइल हो गला एगुड़ा सब आमर निहाती भाव डिफेन्स एंड आमर इंडिया बहुत ही आम कहीपर हेल्प करता है। नेक्स्ट वन हु हाज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी रो फास्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कथा जदि देखा जो मानकर क्वालिटी जदि बढ़ुनी ताले एडवांस को जाइए 480p रे रखिदेवे क्वालिटी भल से आसो एंड आपको आप देखी भी पारे। ये होती अलका मित्तल इज राइट आंसर जी आपको जो मेंशन करुँच ऑयल एंड नेचुरल गैस अलका मित्तल सक्सीडेड आम सुभाष कुमार। तो ये डायरेक्ट मन रखु अलका मित्तल ही आसवे फास्ट वुमेन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओएनजीसी। बहुत ही बढ़िया। who was recently appointed as new director general और आम जब देखिए नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा बाय सक्सीडिंग राजीव रंजन मिश्र। देखो क्लीन गंगा कथा आसो क्वेश्चन मे भी आसीपे न आसीपे बट यही क्वेश्चन गुड़ा छोट छोट जिन गुड़ा टिके देखी रखा दरकार खाली माइंड रे मन रखु। जी अशोक कुमार एडिशनल सेक्रेटरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जी अशोक कुमार वाज अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। जो आपण मैंने ओसीएस प्रिपेयर होती सो से टाइम कंपलसरी पेपर नमामि गंगे एक्शन प्लान विषय जो आसी था सीटा आप देखा दरकार ना स्कीप करें बट जी अशोक कुमार गंगा प्रोजेक्ट उपर मन रखु। नेम द फास्ट वुमेन ऑफ कलर हु रिसेंटली मेड ए सोलो ट्रिप टू अर्थ साउथ पोल। फास्ट वुमेन ऑफ कलर जी कि आम कहीपर मेड ए सोलो ट्रिप टू द अर्थ साउथ पोल। आर्थर साउथ पोल पर्यंत जदि देखा सोलो ट्रिप करिथिबा प्रथम जदि देखा महिला एंड वुमेन ऑफ कलर ये मेंशन करुच्ची मैंने आप भल से जानी रखु। हरप्रीत चंडी इंडियन ओरिजिन ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर कैप्टेन हरप्रीत चंडी बिकम द फास्ट वुमेन ऑफ कलर टू मेक। देखो वुमेन ऑफ कलर माने निहाती भाव आम कहीपर ब्रिटिशर्स को रिलेटेड आसूची। येस ऑन सबोर्डेड टॉर्क ऑन अर्थ साउथ पोल कैप्टेन हरप्रीत चंडी yes is a physiotherapist who was popularly known as Polar Preet complete 700-mile solo expedition to South Pole in 40 days. Okay, good afternoon. Which is world's first company to reach $3 trillion market capital? $3 trillion market capital माने आपण माने जानी रखंतु जहार जहाँ को धरिया को समस्त इच्छा थाए किंतु बैंक रे पैसा न थाए से होची एप्पल INC स्टॉक मार्केट वैल्यू राइज $3 trillion। ओके एगुड़ा आपण मैंने भल से जानी रखु। टीम कुक का ना भी ये राशि थाए आप मन रखु। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली कंपनसेटेड द लार्जेस्ट एंड सिंगल साइट सोलार पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया with a capacity of 600 megawatt in Bakaner, Rajasthan? Which of the following company yes commissioned the largest single site solar power project? सिंगल साइड सोलार पावर प्रोजेक्ट कथा जदि देखा ये गुड़ा आपण मैंने डायरेक्ट मन रखा दरकार। ये आपन को दूसरी येस आम कह ग्लोबल पावर ग्लोबल येस APG दैट इज 600 मेगावाट इंटर स्टेट ट्रांसमिशन
connected a solar project allocated by Solar Energy Corporation. And एठी आमे जदि देखिया दिबा, this is the largest solar power project in India, owned and operated by a single location by an developer. छोट छोट इंसोडा बड़ भलो से मने रखंदु. Which state become the first LPG enabled and smoke free state of India? A question टा बहुत important. With the help of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना and मुख्यमंत्री yes आमे जदि देखिबा गृहिणी सुविधा योजना, फर्स्ट स्टेट टू बिकम LPG enabled and smoke free state, तो ये हो जाउची हमर हिमाचल प्रदेश HP. हिमाचल प्रदेश has become the first LPG enabled and smoke free state, Indian state, and this success is backed by central government Pradhan Mantri Ujjwala Yojana scheme and HP government Mukhyamantri yes Grihini Subhidha Yojana. Under the Ujjwala Yojana scheme, 1.36 lakh of free domestic connection were given to the state of cost of 21.81 crores. huh. In January 2022, who partnered with Common Service Center to undertake India's cultural survey of village that is called Mera Gaon Meri Dharohar. Mera Gaon Meri Dharohar through mobile application. या को आपण भलो से मने रखंतु, ये होची Ministry of Culture and it is the first of its kind. That is Mera Gaon Mera Dharohar through mobile application. It is a document of the cultural identity of the village level, and the survey is expected to become the mid of 2020. Basically आमे जदि देखिया जिबा एडा ध्यान रखंतु, which country recently joined the 102nd member of International Solar Alliance. International Solar Alliance रे आमे जदि देखिया recently आपनकर आमे कहि परिबा निहाती भाबरे yes Antigua and आमे जदि देखिबा yes Barbuda he join कराइछि. KJ Srinivas become the High Commissioner of India to Guyana and Antigua and आमे जदि देखिया yes Barbuda sent जदि देखिया Kitts and Nevis on the 15th member yes CARICOM, that is Caribbean Community on Common Market in 2019 about International Solar Alliance. आपण जानिथिबे इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च करथिला 2015 रे एंड एटी आमे कहि परे 2021 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज इन पेरिस फ्रांस टू प्रमोट सोलर एनर्जी. which who recently जदि देखिए ओन द फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी. न्यूमेरोलॉजी कथा जदि देखिबा एसआई एटा कॉन्स्टेबल आ माने ट्रैफिक आ एक्साइज विषय आसी 477 टा नु आदित्य एटा लगा. जेसी चौधरी इंडियाज वन ऑफ द टॉप न्यूमेरोलॉजिस्ट. जेसी चौधरी भलो से मने रखंतु, फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमेरोलॉजी एंड फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 2022 बाय एजुकेटिंग अबाउट एनिसेंट साइंस. तो ये आमे कहि जेसी चौधरी इज राइट. हु ऑथर्ड द बुक Gandhi's Assassin, The Making of Nathuram Godse and His Ideas of India. Who authored the book Gandhi's Assassin, The Making of Nathuram Godse and His Ideas? तो ये बेसिकली आपण जानि रखंतु धीरेन के झा. इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा मने रखंतु. धीरेन के झा के द्वारा Gandhi's Assassin, The Making of Nathuram Godse and the Idea of India. In January 2022, who became the first telecom company to launch UPI ऑटो पे फैसिलिटी फॉर बोथ प्रीपेड एंड आमे जदि देखिए पोस्टपेड सब्सक्रिप्शन इन कोलाबोरेशन विथ NCPI. तो ये आपण रही जाउछि रिलायंस जियो. आपण माने ऑटो पे ऑटो डेबिट जदि फीचर्स को रखी देथिबे तो ऑटोमेटिक आपण अकाउंट रु कटि जिवो. रिलायंस जियो हैज बिकम द फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी टू लॉन्च ए UPI ऑटो पे फैसिलिटी फॉर बोथ प्रीपेड एंड पोस्टपेड सब्सक्रिबर्स अबाउट नेशनल पेमेंट फॉर कोऑपरेशन इन इंडिया. NPCA CEO MD होसुंदी दिलीप अपसे. एस्टाब्लिशमेंट इज 2008 हेडक्वार्टर मुंबई एंड महाराष्ट्र. Whose company recently launched a mega bond sale and claimed it to be a largest ever foreign currency bond insurance from India. Which company recently launched a mega bond sale and claimed that largest ever foreign currency bond? तो ये ही जाउछि हमर रिलायंस इंडस्ट्री. रिलायंस इंडस्ट्री फर्स्ट क्वार्टर रे आपण माने समस्त देखिथिबे कि मैक्सिमम आमे कहि परिया बॉन्ड तांकर सेल करथिला एंड 3 to 5 billion of offshore investor. The sale claimed the largest ever foreign currency bond in yes issues from India about 2022. First आमे जदि देखिया फंड रेजिंग बाय एन इंडियन कंपनी एंड RIL आपण जानिथिबे 10 to 4 year भीतर ये बॉन्ड शेयर करछ डिफरेंट कंट्रीज को. या विषय एते भी देखिबानी फाइनेंस रिलेटेड. Who was recently reappointed as the chairman
of the Commissioner for Agricultural Cost and Price CACP कथा जदि देखा ये होती विजय पॉल शर्मा आउ थे भलसे मन रखा चेष्टा करूँ विजय पॉल शर्मा आज रीअपॉइंटेड as the chairman of Commission for Agriculture Cost and Prices आसूची. Next one, in January 2022 NHPC Limited and an agreement with GEDCOL for joint venture of set of 500 megawatt floating solar power project 500 megawatt floating solar power project Odisha रे. Okay, NPHC signed a promoter agreement with Green Energy Development Corporation of Odisha told yes in to form a JV or for a setting of NFCC hold 74 sec and year 26. The JV will have to authorize to share capital of 500 crore divided into 50 crore share of 10 each. But basically आम कह ओडिशा रे 500 मेगावाट रे floating solar power project launch करा जिवो. Which state recently partnered with आम जदि देखिबा नियत भाबरे citizen to provide life certificate to pensioners through video KYC. तो ये आपन जानि रखु आपन समस्त जानिथिबे जदि आपन घरे के पेंशन पाउथिबे तो वर्ष को वर्ष आपन यही बोधे मार्च एप्रिल लाइफ सर्टिफिकेट देवाक पड़ता है एंड फिजिकली जीवाक पड़ता है. येस एडी आम कह साइंटिजेन डिजिटल आइडेंटिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड हैज पार्टनर्ड विथ ओडिशा गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ए वीडियो KYC सॉल्यूशन इन ऑफरिंग लाइफ सर्टिफिकेट टू 5 लाख पेंशन स्टेक होल्डर. ओके एडी आम जदि देखिबा येस को फाउंडर एंड येस चीफ बिजनेस ऑफिसर आम सिद्धार्थ आम कुटपल्ली CEO होती नियस बंशीकोटे एस्टाब्लिश 2014 ये तेलंगाना बेस्ड कंपनी. Which district of Odisha recently declared itself as the first child marriage free district? चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट भाव में आप जानी रखुन जो बाल्य विवाह कर दिया 18 वर्ष पूर्व तो गंजाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा has declared itself is first child marriage free district of Odisha. The Ganjam administration has increased the reunion for informing about the occurrence of child marriage from 5,000 to 50,000 following the launch of Nirbhaya yes Khadi campaign. The district has prevalent 45 to 228 or 201 implementing child marriage. तो child marriage free हेले गंजाम ही आसीबो. ओके. In January 2022, Union Defense Minister Rajnath Singh flagged up the first multi-dimensional adventure sports expedition in India in which country? ये आपण भल से मन रखु. यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह फ्लैग्ड ऑफ द फास्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपेडिशन. तो ये बेसिकली आम जब देखिए फ्रांस. yes the union minister Rajnath Singh flashed the first multi dimensional adventure sports expedition of India which was yes conducted by the National Institution of Mountaineering and Allied Sports in France. okay तो बेसिकली आम जब देखा राजनाथ सिंह ये आम कहीपर फ्रांस रे बेसिकली मेंशन करा जायछि. in which city Haryana to get India's first heli hub by Ministry of Civil Aviation in January 2022. हरियाणार आम जदि देखा निहत गुरुग्राम भल से मन रखु फास्ट हबर yes heli hub माने हेलिकॉप्टर हब जो आसूची the first of its kind heli hub in Gurugram to have facilitate one place for helicopter. The hub will several aviation facility like helicopters, hangars, repairs and other related services. Gurugram re recently a joint statement to जदि देखा prevent spread of nuclear weapon was signed between nuclear power countries. Which of the following country is not one of his signatory? देखी रखु ये आम कह न्यूक्लियर पावर कंट्रीज रे इंडिया साइन करेनि. 5 मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड चाइना, फ्रांस, रूसिया, UK and US have agreed to sign a joint statement to prevent atomic weapons for spreading and to ensure nuclear war never fought. The 5 nuclear weapon ने एठी आम कहि परिबा करतला. The joint statement is presented to a reunion committee by a prevent any confirmation from turning into a nuclear war. तो ये आम जब देखिए which country not one of the signatory तो इंडिया एक्चुअली साइन करेनि. Which state won the first prize in the 3rd National Water Awards 2020 under the best state category? बेस्ट स्टेट कैटेगरी कथा जदि देखा आपको आपण भल से मन रखा चेष्टा करूँ. बेस्ट स्टेट कैटेगरी उत्तर प्रदेश. बेस्ट
Yes, UP has been awarded first prize in the best state category in third national water award 2020. The award was announced by Union Minister of Jal Shakti Gajendra Singh Shekhawat. Uttar Pradesh was followed by Rajasthan and Tamil Nadu. Muzaffarnagar in Uttar Pradesh received the best district award in northern zone, followed by Amazirikha Shahid Bhagat Singh Nagar in Punjab. Which of the following sports council of the deaf host the first World Deaf T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन जनवरी 2023? डेफ आपण जानी रखंतु जो माने ये जानते तो जो बॉल आपण राशि थाए तांकर माने दिव्यांग जो माने रहिले तांको मानको पई कोई पर फर्स्ट T20 चैंपियनशिप वेयर इज ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डेफ होस्ट द फर्स्ट वर्ल्ड T20 डेफ चैंपियनशिप इन जनवरी 2023? तो ये केरला रे हबा को जाउची. Yes, the first approval of All India Sports Council to host the first World Deaf T20 Championship in Kerala from January 10 to 20. Okay. Which state government recently signed a MOU with National Dairy Development Board to set up 2000 crore dairy joint venture? आपको आपण स्किप करि परिबे. ये होची आसाम रे एक्चुअली मेंशन कराइची 10 लाख लीटर मिल्क थ्रू 6 न्यू प्रोसेसिंग यूनिट इन 7 years. Which state forest department recently launched a first of its mobile called Urban Forest Park to provide information about urban parks and forest area? Urban park and forest area को भी क्वेश्चन को भी स्किप करि परिबे. तेलंगाना ही फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड और अर्बन फॉरेस्ट पार्क जदि देखिया लॉन्च करिछि. इन व्हिच सिटी 9th edition of North East Festival was conducted in January 2022? देखि रखंतु नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ये 9th एडिशन हेले आपको आप भल से मन रखु गुवाहाटी आसाम. बहुत ही बढ़िया. समस्ते ट्राए करूँ पार्टिसिपेट करने आंसर दबा ट्राए करूँ ताकि आपण भितर गोटे रुनून कि आपण मैंने जानी जदि भी जानी ना वन लाइनर भाव भी कले नोट करें. बट आपण मैंने टे शुणु ध्यान देखे आउ थे भी शुणीदे. एव्री इयर वर्ल्ड हिंदी डे यहाँ आपण मैंने समस्त जानी रखा दरकार. वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन वर्ल्ड हिंदी डे आमर केबे सेलिब्रेट कराउची एंड अक्रॉस द ग्लोब आमे जदि देखिया जिबा दैट इज इन 10th January आमे कहि परिया वर्ल्ड हिंदी डे आल्सो नोन एज विश्व हिंदी दिवस. इट इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 10th January टू प्रमोट द वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज. प्रवासी भारतीय दिवस नॉन रेसिडेंट्स इंडिया डे इज एनुअली ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया on to mark the yes आम कहीपर रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका. ये ध्यान रखु एंड आपण मैंने बुझे चेष्टा करूँ. प्रवासी भारतीय दिवस आम कहीपर प्रत्येक वर्ष 9th January रे ही सेलिब्रेट करा जाता है. 9th January 1915 आसते ना 2003 ने फास्ट प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट कराइला. व्हिच कंपनी रिसेंटली गॉट कैटेगरी 1 लाइसेंस फॉर इंटर-स्टेट ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इंडिया by the Central Electricity Regulatory Commission CERC? जदि देखिबा ये सतलेज जल विद्युत निगम. करेंट अफेयर ये देवांशु शेखर. मिनिमम तो आपण 9 मास देखियार पड़ो. 9 मास या हुए 12 मास देखियार अच्छी. व्हिच कंट्री पावर एक्सचेंज लिमिटेड रिसेंटली साइंड एन एनर्जी ट्रेडिंग एग्रीमेंट विथ इंडिया? इंडिया आम जदि देखिया येस मणिकर्ण पावर लिमिटेड टू सेल इलेक्ट्रिसिटी. ये आप भल से मन रखु नेपाल सहित यहाँ आपण मैंने भल से मन रखिए ध्यान रखा चेष्टा करूँ. नेपाल पावर एक्सचेंज लिमिटेड NPEL साइंड एन एनर्जी ट्रेडिंग एग्रीमेंट विथ इंडियाज मणिकर्ण पावर लिमिटेड टू सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय द डोमेस्टिक प्राइवेट सेक्टर टू इंडिया थ्रू इंडियाज मणिकर्ण पावर. ये टाइप एग्रीमेंट आपण मैंने भल से मन रखु. ये आम कह द एग्रीमेंट विल अलाउ नेपाल टू सेल 500 megawatt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी to India in the initial phase. Chris Morris recently announced his retirement for all form of cricket. Which country did he represent international cricket? Chris Morris को ना कथा जदि देखिबा साउथ अफ्रीका नु आपण माने जानिथिबे. Morris is the expensive buy in history IPL 2021 रे 16.25 crore रे राजस्थान रॉयल दाम किनिथिला. बट एठी आपण जानि रखंतु साउथ अफ्रीका रु क्रिस मॉरिस आसुंदी. Which state will host खेलो इंडिया गेम्स 2023? 2023 खेलो इंडिया गेम्स को आम कहीपर किए होस्ट करा जाऊँगी? महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक या तमिलनाडु? भल से मन रखु कर्नाटक. खेलो इंडिया गेम्स 2021 शेड्यूल टू बी हेल्ड इन February 2021
टू ये हरियाणा रे एंड 2023 जदि देखा कर्णाटक रे हम खेलो इंडिया. Which of the following railway station in Gujarat recently renamed to Ekta Nagar Railway Station by the Ministry of Railway? Yes, Ekta Nagar Railway Station कदा जदि देखिबा ये होची ये आमे भलो से नारी रखंतु कबेडिया रेलवे जो आसुची yes station under the Vadodara division of Narmada district as the Ekta Nagar railway station. एटी आपण भलो से जानी रखंतु the railway station is the key to reach world's tallest statue unity जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एकता नगर रेलवे स्टेशन का ना दे दिखाई. आज फॉर द येस हेलनेस पासपोर्ट इंडेक्स Q1 2022 ग्लोबल रैंकिंग Q1 है एक्चुअली इंडिया वाज रैंक्ड डैश एंड मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट व्हाइल डैश शेयर्ड द टॉप स्पॉट्स अलोंग विथ सिंगापुर. देखो सिंगापुर तो टॉप क्लास रे रोची इंडिया रैंक 84th तापर जापान आउ सिंगापुर दुईटा एटी आप जानी रखु पासपोर्ट इंडेक्स अनुसार दैट इज 84th इंडिया हैज बीन रैंक्ड 84th मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट विथ द वीसा फ्री ट्रैवल टू 60 कंट्री while Japan tops the list with 4th consecutive year allowing visa free travel to 192 countries and the index has been topped by Japan and Singapore. Okay, एगुड़ा आप भल से जानी रखु इंडिया शेयर 84th पोजिशन विथ मॉरिशियस एंड तजाकिस्तान सहित शेयर कर इंडिया रैंक 84th आम 60टा देश को वीसा फ्री माने विदाउट वीसा रे जाई परिबा. गुड आफ्टरनून. व्हिच इंडियन एयरपोर्ट secured 8th rank globally under the large airport category on time performance review 2021 airlines and airport report by आमे जदि देखिया किरकुम ये सोमर जदि देखा एयरपोर्ट 8th रैंक रे आमे कहि परिबा ये होची चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट. भल से मन रखा चेष्टा करूँ. जय जगन्नाथ. द फास्ट 3 पोजिशन हैव बीन एक्वायर्ड बाय यूएस yes जदि देखिए इटामी एयरपोर्ट जापान yes फुकुओका एयरपोर्ट एंड yes आमे जदि देखिए इंडिया एयरपोर्ट रोची yes एंड आमे कहि परिबा चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 8th नंबर पोजिशन ने अच्छी. छोट छोट जिनसुड़ा आप भल से जानी रखु एंड इट इज द ओनली इंडियन एयरपोर्ट टू एंटर इन टॉप 10 पोजिशन ऑफ द लिस्ट. Who authored the book Ratan N. Tata the authorized biography? Okay, रतन टाटा विषय जदि देखा आपको भल से मन रखा चेष्टा करूँ दैट इज थॉमस मैथ्यू द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ रतन नोवेल टाटा an Indian industrialist, philanthropist and former chairman of Tata Sons. Yes, and authorized by Dr. Thomas Matthew will publish in November 2022. The biography will publish by E.S. HarperCollins in Indian in English and E.S. the principal Indian language by HarperCollins, leader of US, and William Collins in the UK. Thomas Matthew. What was the theme of National Youth Day celebrate across on India on 12th January? 12th January आम जदि देखा जावा आपको भल से मन रखु आमर थिला इट्स ऑल इन द माइंड यूथ आम कहीपर आम जदि देखा जावा इट्स ऑल इन द माइंड इज राइट आंसर. इन January 2022 डैश होस्टेड द 25th National Youth Day 2022 डैश इन द टैगलाइन ऑफ द डे. ये भल से जानी रखु January 2022 रे होस्टेड द 25th National Youth Day. तो ये आम कहीपर yes पुडुचेरी आम कहीपर होस्टेड द 25th National Youth Day for the year 2022. The festival was virtually inaugurated by PM नरेंद्र मोदी and ये आम कहीपर टैगलाइन ये हूँ सक्षम युवा सशक्त युवा सक्षम युवा सशक्त युवा 25th National Youth Festival. Which company recently signed a MOU with South Korea's POSCO to explore business in steel and renewable energy? Business and steel in renewable energy साउथ कोरिया पोस्को कंपनी ये जाऊँगी अदानी ग्रुप. आपको आप भल से मन रखु द इन्वेस्टमेंट अंडर MOU एस्टिमेट टू बी $5 billion. द पोस्को फॉर्मरली yes Pogan Iron Steel Corporation was launched the 1st April in 1968. Zong O C is right answer. बहुत ही बढ़िया. Who was recently appointed as the new chairman of Indian Space Research Organization ISRO by succeeding K. Sivan. K. Sivan को सक्सीड करिकी ISRO रो जदि देखिबा चेयरमैन आपनकर एस आमे जदि देखिया सोमनाथ
भल से मन रखु एस सोमनाथ was the chairman of Indian Space Research Organization and Space Secretary Department of Space. He will succeed K. Sivan, yes, who is said to retire on 14th January 2022. S. Somnatham. In January 2022, who became the first Indian to grab world number 1 ranking in under 19 girls single category in BWF junior ranking. BWF junior ranking रे जदि देखिया जिबा को आपण भल से मन रखिया चेष्टा करंतु दैट इज तस्नीम मीर become the first Indian to grab world's number 1 under 19 girls single category with 10,810 points in latest badminton world federation junior ranking. She followed by Nies Marias Glubeva from Russia and Lucia Rodriguez from Spain. बहुत ही बढ़िया. The 6th Armed Force Veteran Day is observed across. देखो Armed Force Veterans Day जदि देखा ये 14 जनवरी रे सेलिब्रेट करा जाउची. The day honor the service yes rendered by Field Marshal आमे जदि देखिया कोडन मतलब पकारियप्पा KM करियप्पा ना सुनिथिबे Commander in Chief of Indian Armed Forces. 14 जनवरी. Which country recently launched fast maritime yes domain awareness satellite to yes constellations from Cape Carnival, United States. तो बेसिकली आम जदि देखा साउथ अफ्रीका लॉन्च द इंडिजिनियसली डेवलप फास्ट मैरिटाइम डोमिनियन अवेयरनेस सैटेलाइट जो आम कहीपर कन्स्टलेशन फ्रॉम केप कार्निवल ऑफ यूनाइटेड स्टेट एंड ये एक्चुअली कौन कर आपको जब आम ध्यान देवाक जावा दैट इज कंसिस्ट ऑफ 3 नैनो सैटेलाइट एंड ये इज फंडेड बाय Department of Science and Innovation of the country. The MD-SAT constellation consists of 9 cube satellites. In January 2022, Indian Olympic Association was appointed dash as the Indian chief the mission of Commonwealth. ये बेसिक एक क्वेश्चन गुड़ा स्किप करि परिबे. ये होसंदी राकेश आनंद एंड भूपेंद्र सिंह भोजा रहउसंदी जे कि आमे कहि परिबा as the chief the mission Commonwealth Games 2022 and भूपेंद्र सिंह जदि देखिबा yes ये रहउसंदी जाडी रखंदा एडी मेंशन करिछि नेम द एक्ट्रेस हु रिसेंटली रिसीव द 12th भारत रत्न जो देखिए डॉक्टर अंबेडकर 2022 अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन बजरंगी भाईजान कथा जो देखिए 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड ये आपण मैंने भल से मन रखा दरकार. येस आम कहीपर हर्षाली मल्होत्रा हिंदी एक्ट्रेस हर्षाली मल्होत्रा हैज बीन ऑनर्ड विथ 12th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस एज मुन्नी ए म्यूट गर्ल फ्रॉम पाकिस्तान 2015 फिल्म बजरंगी भाईजान पाई. ओके एंड सी रिसीव द अवार्ड एटी आम कहीपर सेरेमनी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ yes केडिया सिक्योरिटी डॉक्टर विजय केडिया also received the भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर जो देखा 2022 अनुसार हाँ मुनि को मिलता. Which of the following country recently launched free trade agreement negotiation with India? Free trade agreement negotiation with India जदि देखा आपको आप भल से मन रखा दरकार that is United Kingdom. Okay, United Kingdom, the government of United Kingdom launched a free trade agreement negotiation with India and the negotiation was described as a golden opportunity to British business at the front queue. तो यूके आम जदि देखा जावा which launch free trade agreement negotiation with India जो थे आम कहीपर अंडर द नेगोशिएशन यूके वांट्स टू आम जदि देखा an agreement to remove barriers to cut tariffs on export of British made cars and Scotch whiskey. The first round of negotiation was agreed to being on 17 January 20 जो एक्सपोर्ट ड्यूटीटा अधिका पड़ुची सरी इंपोर्ट ड्यूटीटा ताकू हटेया ये गोटे चलता. Which of the following company recently signed a MOU with India INX to launch the fast Bitcoin and Ethereum future exchange traded funds at Gift City? देखी रखु which of the following company recently signed a MOU with India INX जदि देखा ये सिंपल ସେଇଟା ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା ଟୁର୍ ସ୍କିଲିଂ ବ୍ଲକ୍ ଚେନ୍ ଅଫ୍ IFCS एंड ये आम कहीपर क्लीन ट्रेड इंडियन साइंड MOU विथ INX टू लॉन्च फास्ट बिटकॉइन एंड इथेरियम फ्यूचर एक्सचेंज
trade fund in India. These funds will becomes India's first crypto backed features outside the United States. छोट छोट जिनिस गुड़ा बहुत भल से जानी रखा दरकार. Name the Indian naval ship that conducted a passage with Russian Federation Navy destroyed admiral tributes at Cochin port in January 2022. Naval ship that conducted passage exercise with Russian Federation. तो ये आम कहीपर INS कोची. India's Navy's indigenously designed and built guided missile destroyed INS Kochi has undertaken the international passage exercise with Russia. देखिए रखु ये नाभाल एक्सरसाइज भी आप इंपोर्टाट आसी जाए. पैसेज एक्सरसाइज है मैंने आम कहीपर रुषिया सहित होती. नेवी destroyed admiral tribute to the port of Cochin in the Arabian Sea. Next one. Which country conducted a maritime exercise with the Indian Navy in Bay of Bengal that saw the participation of INS Shivalik and Amiya Kadmat. एटी आपण माने भलो से ध्यान रखिए जदि देखिबा. Which country conducted the maritime exercise with the Indian Navy in Bay of Bengal that saw in appreciation of INS Shivalik and INS Kadmat कथा जदि देखिबा, that is Japan. In January 2022, Ministry of Heavy Industry launched India's first coal to dash plant in VHEL unit at which area? Basically आपण जानी रखंतु कोयला टू मिथानॉल. The Union Ministry has launched Union Ministry of Heavy Industry Mahendra Nath Pandey dedicated the first coal to methanol CTM pilot plant in the Hyderabad unit of Bharat Heavy Electronics Limited. Coal to methanol ये होची Hyderabad. It is first of its kind technology demonstrated in India which convert high ash contains Indian coal methanol through gasification route. Which village from Kerala recently become first ever sanitary napkin free village? Sanitary napkin free village जदि देखिबा ये important one and आपण माने भलो से जानि रखंतु केरला रो गोटे village that is आमे कहि परिबा yes कुंभलंगी village. Arfi Muhammad Khan, governor of Kerala, declared Kumbhalangi village India's first eco-friendly tourist village in Ernakulam district of Kerala, the first ever sanitary napkin free in India. एगुड़ा छोट छोट जिन बड़े भल से जानी रखा दरकार. नेक्स्ट वन. Which ministry launched Raksha Pension शिकायत निर्माण portal to resolve the pension dispute of ex-servicemen? रक्षा पेंशन शिकायत निर्माण पोर्टाल. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा आपको इनिशिएट कराई 14 जनवरी. द डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री and internal trade DPIIT has recognized the year 2021 as year of promotion intelligence unicorns ये industries. देखिए रखो आपको year of unicorns कहा जाता है. डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री and internal trade under the Ministry of Commerce and Industry has designated the year 2021 as the year of unicorns. National E-Governance Division organized Dash to Cisco Deep Dive Trading Program under Dash between January 17-22 भितर आम देखा. The E-Governance Division organized ध्यान रखा चेष्टा करूँ एंड बुझा चेष्टा करूँ 26 आम कहीपर सिस्को आम रोचे कौन यस SICO डीप ड्राइव ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आसूँ क्या अंडर रे ना आम कहीपर साइबर सिक्योरिटी भारत अंडर रे. ये क्वेश्चन गुड़ा स्किप कर. आइडेंटिफाई द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसेंटली साइंड फास्ट कॉन्ट्रैक्ट विथ आम कहीपर एंड्रोन सिस्टम ओके टू रिसीव yes manual expandable aerial target under MEC 2. ये एक्चुअली बेसिकली आम कह इंडियन आर्मी ये इंट्रोड्यूस कर स्किप कर. इन January 2022 ये आपको मेंशन कर हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बाय सक्सीडिंग डॉक्टर ए आम देखा सिकदल लॉरेंस वेलकम. तो January 22 आम जब देखा जा नरेंद्र कुमार yes गोनकन जदि देखा yes टेक्सपोर्ट इंडस्ट्री took charge as the chairman of APEC under both the agency of Ministry of Textile by succeeding Padma Shri Dr. A. Yes Siftal who has been an APEC chairman January 2020 रुथिले. Which company recently become the new
title sponsor of official technology consulting partner of Toronto waterfront marathon. तो ये बेसिकली एटा स्किप करि परियो TCS एक्चुअली द इंडियाज फास्ट डी जदि देखिए इलेक्ट्रिक degree holder Narayan Devnath passed away recently, in which field he received Padma Shri. Padma Shri award कथा जदि देखिबा को आपण भल से मन रखंतु आर्ट पई पाइतिले. Rabindranath University has honored with Dr. Yes little degree. He has been first of his only comic artist in history. Okay, D.Lit जदि देखिबा degree he was honored with Padma Shri and fourth highest civilian honor of India. The open data week from January 2021 ये actually observed by Smart City Mission Ministry of Housing and Urban Affairs. ये open data week 17 ରୁ 21 ଜାନୁଆରୀ आको skip करि परिबा. Which state recently partnered with World Food Program to improve the food security of farmers by strengthening their reliances to climate change. Strengthening their reliances to climate change हेले तो ये आमे कहि परिबा ओडिशा. Government of Odisha and UN Food Program have partnered to improve the food security of small and marginal farmers of India by enhancing their reliance in climate change. Odisha. The which ministry recently inaugurated digital government mission to speed up citizen service delivery through artificial intelligence and machine learning. ये आमे कहि परिबा आकु भी स्किप करि पारे. Ministry of Electronic and Information Technology name the company that recently signed a contract with Mauritius government to export and advance light helicopter. देखि रखंतु that is Mauritius government export करिवो तो ये होची Hindustan Aeronautics Limited HAL sign a contract with Mauritius government to export one advance light helicopter ALH Mark 3 for Mauritius police force. Okay. In January 2022, which country received US $500 million line of credit from Indian government to purchase petroleum products? Petroleum products ପାଇଁ Sri Lanka ଜାଣିଥିବେ disaster ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଇଏରେ. Yes, RBI also extend over 900 million loan to Sri Lanka to utilize their being utilized by the latter to build up deplete foreign reserve and ଯଦି ଦେଖିବା for food imports. Who recently won the Miss World 2022 held in Las Vegas? Yes, आमे जदि देखिबा नेवाडा US. या को आपण भल से मन रखले जानि परिबे. That is Salon Ford from the United States of America was chosen as the winner of Miss World 2022. Yes, Salon Ford is right. ए क्वेश्चन आपण राशि परिबो. Who was recently appointed as the chairman and managing director of Air India by succeeding Rajiv Bansal. Air India रा जदि देखिबा नुआ implementation हो साला परे विक्रम देव भट्ट. ओके ये आमे कहि परिया succeeded Raj Bansal secretary Ministry of Civil Aviation and आमे कहि परिबा नियत कंसल कुमार principal secretary of Bihar Chief Minister Nitish Kumar has been appointed as the MD of National Highway Infrastructure Development Corporation under the Ministry of Road Transport and Highways. 17th National Disaster Response Force Rising Day was observed across. National Disaster Response Force Rising Day ये आपण भल से जानि रखंतु 19th January NDRF Day. In 15th meeting of BRICS Science Technology Innovation Steering Committee decided that who will host 5 events in 2022 and who will chair. देखो ब्रिक्स समितिर जो देखिए 5 इवेंट को इंडिया होस्ट करिवो एंड आकु चेयर करिवो आमे कहबरिबा यस चाइना. संजीव कुमार यस वर्षे द एडवाइजरी ऑफ आमे जदि देखिबा ऑफ हेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड द इंडियन डेलीगेशन ऑफ 15th मीटिंग ऑफ ब्रिक्स STI steering committee. In January 2022 who become the first black woman to appear in the US currency. एटा इंपोर्टेंट वन एंड आपको आपण माने भलो से मन रखिया चेष्टा करंतु. ये होसुंदी दैट इज माया अंगलिवर होइले जे कि इट इज द फास्ट माने आमे कहि पारे बिकम द फास्ट ब्लैक वुमेन टू बी फीचर्ड ऑन द US currency. This is the part of US American women quaternary programs. Maya Angelou is known as for her autobiography title I Know Why the Caged Bird Sings.
तो सांकर भी आम कह पोटास यूएस रे नेम द इंडियन क्रिकेटर हु रिसेंटली नेम द आईसीसी वुमेन T20 टीम ऑफ द ईयर तो ये आम कहीपर आपको आप भल से मन रखो आम स्मृति महादन इज राइट आंसर yes it is also the third time Smriti Mahadan won the title of T20 yes international team of the year 2018 opener 2019 I am number 3 yes no all Indian player named the men as well as women list ये स्मृति महादन का नाम है Indian tennis player Sania Mirza recently announced her retirement from sports end of 2022 in which year did she receive Major Dhyanchand Khel Ratna award मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कथा जदि देखा भल से मन रखु 2015 येस सी मेड द अनाउंसमेंट फॉलोइंग अ डिफीट ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल फर्स्ट राउंड विथ पार्टनर विथ जदि देखा किसी कि यूक्रेन थे ये 2004 रे अर्जुन अवार्ड फॉर टेनिस 2006 रे पद्मश्री फॉर स्पोर्ट्स 2015 रे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से एबे आजिकल जाइए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2016 रे पद्मभूषण तांको स्पोर्ट्स पाई मिलिथिला हु को-ऑथर द बुक द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा एलोंग विथ यस तुहिन ए सिन्हा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ये आम कहीपर निहत भाव अंकिता वर्मा यस महाराष्ट्र गवर्नर भगत सिंह केसरिया रिलीज ए बुक दैट इज लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा ऑथर्ड बाय यस आम जो देखिए तुहिन ए सिन्हा एंड को-ऑथर्ड बाय अंकिता वर्मा छोट छोट इन्स गुड़ा बड़े भल से जानी रखु करेन्ट अफेयर कहार भी मन ना बन रखु टेलीग्राम रे जॉइन हूँ यार पीडीएफ आपन को डायरेक्ट मिल जाव 44th जो देखिए यस आम कहीपर कोकबोरोक डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडियन स्टेट ऑन त्रिपुरा ये बेसिकली आम कहीपर 19 January कोक मीन्स आम कहीपर कौन ना भर्बाल ब्रुक मीन्स पुलिस ये आम कह कोकबोरोक डे on human and it is an ancient language of northeast India ये 19 January सेलिब्रेट करा जाउची नेक्स्ट वन which company recently got selected by Indian Armed Force for supplying the single shot anti armory weapon AT4 तो ये आपनर जो देखिए SAB Swadeshi Defense Company SAB has been selected by the Indian Armed Force through a competitive program for the supply of single shot anti-armor weapon AT4. It will be used for Indian Army and the Air Force and SAB 1937 ने स्टॉकहोल्म रो स्वीडन प्रेसिडेंट एंड सीईओ होसुंदी माइकल जॉनसन छोट छोट इन सोडा पड़ भल से मन रखा चेष्टा करंतु इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट P-81 recently participated in ASW exercise Sea Dragon in which city Sea Dragon कथा जदि देखिबा it is Guam in USA okay Sea Dragon is annual multinational high-end exercise hosted by the US Navy. Which company recently signed an agreement with the Fluence to set up joint venture to provide battery energy storage system solution in India? Battery energy storage system हेले Renew Power is right answer. भल से मन रखा चेष्टा करंतु with 100 आम कहीपर yes 50 megawatt requires for its 300 megawatt peak power project in Karnataka निहत भाव में 9 मासर करेन्ट अफेयर कवर करवा देखु करेन्ट अफेयर लॉन्ग टर्म रे पढ़िले माने लंबा एकाथरे 30 मिनट 40 मिनट पढ़िले बोरिंग लगे किंतु हेले भी आम कौन करवा निहत भाव में जल्दी से कवर अप करने चेष्टा करवा नेम द इंडियन क्रिकेटर्स हु वाज इंक्लूडेड आईसीसी मेन टीम ऑफ द ईयर 2021 तो ये होती समस्ते प्राय रोहित शर्मा ऋषभ पंत एंड रविचंद्रन अश्विन इज राइट Which country recently won 8th Asian Cricket Council under-19 Asia Cup by defeating Sri Lanka? श्रीलंका को हरई जदि देखा yes इंडिया ही आसो 19 क्रिकेट टीम by यश धुल was won the 8th Asian Cricket Council under-19 Asia Cup अनुसार एटी दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आम कहीपर सेलिब्रेटेड द एग्री न्यूट्री गार्डन वीक फ्रॉम ये आम कहीपर 10 ରୁ 17 जून which state recently launched अपना जदि देखा निहत कंग्रा आप टू प्रमोट लोकल जदि देखा हैंडीक्राफ्ट्स थ्रू टूरिज्म तो ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश ओके which ministry prepared the revised rural area development plan formulation and implementation guideline that was released in January 2022
तो ये आम कहीपर मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज द्वारा को इंट्रोड्यूस कराई दैट इज संकल्प पात्र बाय लिवरिंग एन एक्टिविटी ओनरशिप अप्रोच. Name the NBFC that yes recently partnered with 197 communication to provide leading products of merchant partner and consumers. तो ये बेसिकली कहीपर नियर फुलेट्रन इन इंडिया. अंडर दिस पार्टनरशिप पेटीएम पोस्टपेड बाय नाउ पे लेटर और इनोवेटिव मर्चेंट लोन product will be offered to the consumer on Paytm platform while utilizing Pluton risk assessment capabilities and understanding the segment. Who has recently honored with Netaji Award for 2022 by Netaji Research Bureau. Netaji Research Bureau जदि देखिबा yes Shinzo Abe on the occasion of 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Research Bureau has honored Shinzo Abe, former Prime Minister of Japan. Yes, I mean जदि देखिए with Netaji Award 2022. Who was recently appointed as the chairperson of Prevention of Money Laundering Act, Argentine Authority. तो ये आम कहीपर येस आम भल से मन रखु विनोद झा ये रोचे आज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ ही रिटायर्ड फ्रॉम येस सर्विस एज द प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इन पुणे. Parakram Divas is annually observed across in India on to mark the birth anniversary of Parakram Divas 23 January Subhash Chandra Bose करो जदि देखिएबा आम कहीपर डे सेलिब्रेट करा जाउची. The first ever Parakram Divas was observed on 23rd January 2021. Prime Minister Narendra Modi unveiled the yes hologram statue of Netaji Subhash Chandra Bose at India Gate. Which ministry prepared the yes revised rural area development plan formulation and implementation guideline that was released in January 2022. Avari gudae question अछि. Ministry of Panchayat Raj. Name the maritime exercise that was recently conducted by Indian Navy at the Arabian Sea. Arabian Sea रे जदि देखिबा आको आमे कहि परिबा पश्चिम लहर 2022 ध्यान रखिबे एंड बुझियो चेष्टा करी जेतो एटा आपन दोची पश्चिम लहर 2022 इज राइट आंसर. Name the yes decommissioned Indian naval ship that was recently handed over to the DU administration that will convert to a museum. तो ये होची INS आमे जदि देखिया कुकरी को पुडचेरी गवर्नमेंट द्वारा निया जाय कि आमे कहि परिया को कौन करा जाय ना आमे कहि परिया गोटे म्यूजियम रे कन्वर्ट करा जाय. Which of the following is not correct with respect to 2022 Padma Bhushan awardee in their field? Sundar Pichai, Rajiv Maheshwari, प्रतिभा राय एंड राशिद खान एंड गुलाम नबी आज़ाद. तो ये बेसिकली आम जब देखा गुलाम नबी आज़ाद ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नुह ये होती पब्लिक अफेयर्स रु. सुंदर पिचाई ट्रेड एंड इंडस्ट्री, राजीव मिश्री सिविल सर्विस, प्रतिभा राय लिटरेचर एंड एजुकेशन, राशिद खान आर्ट. देयर आर 17 अवार्ड्स फॉर पद्म भूषण 2022. समस्त आपने मन रखिए सहज नु तो देखी रखिए. इन व्हिच स्टेट ए न्यू yes gecko species named आम जदि देखिए प्रोटोफ्लोयर्स अपटानी was discovered in January. तो ये आम कहीपर अरुणाचल प्रदेश रे इन जीरो वैली. नोटेबली दिस इज द 5th न्यू स्पीसीज डिस्कवर्ड बाय द रिसर्च टीम फॉर द मंथ लॉन्ग yes herpetological investigation in अरुणाचल प्रदेश. Who authored the book A Little Book of India celebrating 75 years of independence? तो ये आम कहीपर रस्किन बॉन्ड ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 years of independence. Yes, आम कह रस्किन बॉन्ड इज राइट आंसर. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द हॉलोकॉस्ट 2022 दैट वाज एनुअली ऑब्जर्व्ड ऑन 27th January. तो ये गले आम कहीपर मेमोरी ऑफ डिग्निटी एंड जस्टिस. इस क्वेश्चन को स्किप करिपरिबा. नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ 13 डिस्ट्रिक्ट. 13 न्यू डिस्ट्रिक्ट है. आंध्र प्रदेश रे आहरी 13टा नुआ डिस्ट्रिक्ट माने जो बड़ बड़ डिस्ट्रिक्ट गुड़ा अच्छी ताकू काटी पुणी आहरी गुड़ा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट करा जिवो. तार ये टोटल लिस्ट अच्छी बट न्यू डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन है आंध्र प्रदेश आसीबो. इन व्हिच सिटी लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन वाज इनागुरेटेड बाय नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल इन January 2022? ये गुड़गांव इन हरियाणा. which has 100 charging point for 4-wheelers. The station has been installed and operated by yes आम कहीपर इलेक्ट्रिपी प्राइवेट लिमिटेड. 100टा गाड़ी एट ए टाइम
चार्ज हो पारे माने केते बड़ व्हिच कंपनी रिसेंटली पार्टनर्ड विथ एग्रीटेक स्टार्टअप यस आमे जदि देखिबा फार्म्स टू ऑफर डिजिटल इंश्योरेंस सॉल्यूशन टू फार्मर्स तो ये आमे कहि परिबा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस दैट इज फार्म्स an agri-tech startup partnered with Reliance General Insurance Company to introduce customized digital insurance solution. Which company in which company Google recently announced to invest 1 billion to develop India's digital ecosystem. तो ये आमे कहि परिया भारती एयरटेल सहित signed a long-term multi-year agreement with Google to enhance the growth of digital ecosystem in India. Under the agreement, Google is set to invest 1 billion in Airtel, and the agreement also include an investment of $7 million to acquire 1.28% of Bharti Airtel at the price share of rupees 734 each. Name the personality who was recently named as the new chairman and managing director of Hindustan Petroleum Corporation Limited HPCL kata jodi dekhiba that is Kumar Joshi is right answer. In January 2022 who became the India's highest run scorer in ODI cricket overseas during ODI series एटा छाड़ी रखंतु विराट कोहली थिले who co-authored the book Operation Khatam along with RC जदि देखिया गंजू तो ये आमे कहिया गले अश्विनी भटनागर ही आसुंदी ऑपरेशन खत्म अश्विनी भटनागर आउ आसिले RC गंजू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द पंडित आमे जदि देखिया जसराज कल्चरल फाउंडेशन on the birth anniversary of Pandit Jasraj. Who is Pandit Jasraj? Pandit Jasraj is the classical singer. The foundation aims to preserve Indian rich heritage of arts and culture. Padma awardee Pandit Jasraj was legendary classical vocalist who belonged to yes Mewati Gharan. Which company recently partnered with FICCI to support 5 lakh women lead small business under C means business program. तो ये आम कहीपर मेटा मेटा हूँ आम जी फेसबुक जो कोथट आसूँ इन जानुरी मेजर जनरल YP खदुरिया डायरेक्टर ऑफ नेशनल कैडेट क्रॉप्स वाज अवार्डेड विथ प्राइम मिनिस्टर ये एक्चुअली आम कहीपर महाराष्ट्र छाड़ी रखु इन व्हिच स्टेट न्यू स्पेसीज ऑफ फंजी नेम आम जी देखिए करदाम जी वे डिस्कवर्ड in that occasion of Bansal steam road disease ये केरला रे एक्चुअली इसके स्किप करिया तो प्राय जी 100 भाया क्वेश्चन थी डिस्कसन कर दियाला आकुर PDF पाइबापी आपण मैंने क्लास को देखिपारे लास्ट पर्यंत देखूँ एंड ता सहित PDF आपन को टेलीग्राम रे मिल जाव भल से प्रिपेरेसन करूँ बेस्ट वे रे प्रिपेरेसन करूँ एंड जो मैंने बर्तमान सुधा चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कर रखु एंड अनएकाडेमी जॉइन होगापी कोड यूज करूँ Amiya 10 निजर प्रिपेरेसन को आगू नियंतु थैंक यू वेरी मच धन्यवाद जय हिंद जय जगन्नाथ।